करते हैं समलैंगिक विवाह मान्यता पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मान्यता को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है क्योंकि पहले शुरुआती दौर में समलैंगिक संबंध अपराध के दायरे से बाहर होने के बाद अब विवाह संबंध को लेकर क्या फैसला आएगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इस पर आज सभी का ध्यान है। क्योंकि कानूनी मान्यता इसको दी जाए या फिर कानूनी मान्यता नहीं दी जाए, इसको लेकर के क्या फैसला होता है ये देखना जरूरी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना है। 5 जजेस की संवैधानिक बेंच लगातार 10 दिन तक सुनवाई कर रही थी, आपको याद होगा, लेकिन वो मई का महीना था। मई के महीने में सुनवाई की और उसके बाद में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये बेंच, इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल थे। 10 दिनों तक लगातार इस पर सुनवाई हुई और 11 मई को फिर इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। उसके बाद 18 अप्रैल से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस उम्मीद से कोई भी संवैधानिक घोषणाएं नहीं कर सकती कि संसद इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। और उसके बाद कई जगह पर इस चीज को लेकर के सामने भी बातें आई थी कि जो LGBTQ समुदाय है उसका ये कहना था कि इसकी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन तो चलिए आपको सुनवाई दिखाते हैं, लाइव सुनवाई इस मामले पर। It is insufficient if persons have the ability and freedom to form relationships unregulated by the state. For the full enjoyment of such relationships, it is necessary that the state accord recognition to such relationships. Thus, the right to enter into a union includes the right to associate with a partner of one's choice, according recognition to the association, and ensuring that there is no denial of access to basic goods or services, which is crucial to achieve the goal of self-development. On the other hand, the state could indirectly infringe upon the freedom when it does not create sufficient space to exercise that freedom. A formal associational status or recognition of the association is necessary for the free and unrestricted exercise of the freedom to form intimate associations. Needless to say, there may be reasonable restrictions on this right. However, other than legally valid and binding restrictions, the right to intimate associations must be unrestricted. The state, by not endorsing a form of relationship, encourages certain preferences over others. In a previous segment of this judgment, we have discussed the tangible and intangible benefits of recognizing relationships in the form of marriage. While the tangible benefits of marriage are traceable to the content of law, the intangible benefits are secured merely because the state recognizes the relationship through the instrument of law. Intangible benefits in the form of expressive advantages exist irrespective of the content of the law. Even if the law does not grant any special material benefits to a relationship, the relationship would still be considered to be legitimate in the eyes of society. The freedom to choose a partner and the freedom to enjoy their society, which are essential components of the right to enter into a union and the freedom of intimate association, would be rendered odious if the relationship were to be discriminated against. For the right to have real meaning, the state must recognize a bouquet of entitlements which flow from an abiding relationship of this kind. A failure to recognize such entitlements would result in systemic discrimination against queer couples. Unlike heterosexual couples who may choose to marry, queer couples are not conferred with the right to marry by statute. To remedy this, during the course of the hearing, the Solicitor General of India made a statement that a committee chaired by the Cabinet Secretary will be constituted to set out the rights which will be available to queer couples and unions. The committee shall set out the scope